Hello everyone, welcome to another episode of Behind the Creators, presented by Creative Mindset, a series of podcasts to empower young creators and artists. Today we have our guest, someone who's an excellent editor, a photographer, and an amazing video editor, Sion. Hello, everyone. This is me, Shan, on the other side, talking all the way from Kolkata. तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी जर्नी hmm स्टार्ट कहाँ से हुई? जैसे वीडियो क्रिएशन आपने स्टार्ट किया, तो hmm कहाँ से स्टार्ट हुआ? मतलब कब आपका इसमें इंटरेस्ट आया और कब आपने ये सब चीजें सीखना चालू किया? वीडियो या फोटो? टोटली मतलब वीडियो तो बाद में ही किया होगा मेरे ख्याल से। फोटो ही आपने स्टार्ट किया था पहले, हाँ. तो फोटो स्टार्ट किया। Sure. So basically, starts all the way जब पापा, like my father is a big camera fanatic. Since I was small, he loved using cameras, and that's I think so where it came on to me. So I think I think I started shooting first. If I have to be accurate, I started first shooting on my mom's old laptop, mini laptop. उसके front camera से मैं vlog करता था, and I used to upload that on my previous YouTube channel जो अभी मुझे password याद नहीं तो वो गया सब. But I used to post regularly, like when YouTube came out, and I started posting vlogs from 2008 onwards. I was just 8 years old back then, so I used to post vlogs till like 2012 when I got my first like I got my own device. I got my iPad, and that's when I shot my proper first vlog. I made my first vlog in 2016, and then उसी साल I went to Kenya. So I took advantage of that and I made a short vlog. मतलब मैंने कैमरा में लिया था. I didn't have laptop anything. उस टाइम पे I got my first iPhone 6 Plus. तो उसमें I imported all my videos जो भी I shot on my camera while I was traveling. Imported all my pictures from my Nikon camera. Oh yeah, that year I also got my Nikon first camera. So yeah, सब एक साथ मिला था उस साल. तो वो सब मिला, and then I used to edit my pictures on my phone, edit my YouTube videos on my phone, and upload it from my phone. So my phone was like the entire workforce. So I didn't know what a laptop would do at that time. And 2018 में जाके I think so I got my first laptop, and I was like, okay, this is amazing. And coming to like fast forward to this year, 2020, I think it's been amazing because I think that the shift was like very gradual. I did not understand, but now when I look back, I'm like, okay, I made vlogs and then I moved on to making the skits or vines. Then I made these voiceover videos, tutorials, and then now I've moved on, like not moved on, but I've also made it this 3D VFX kind of videos. So I think that was a gradual shift. But if you have to say when I properly started, that would be 2015 late. मैंने आपका उसके एक एक फीड में वो देखा, एक पोस्ट देखा था, लूनर एक्लिप्स का था शायद से वो हाँ 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 फोटोग्राफ था। वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। हाँ वो that was the first time जब मुझे लैपटॉप मिला था. I started experimenting with Photoshop. Actually वो that is not photoshopped. I would say like 40% photoshopped in the sense like ऐसे तो मून तो इट कीप्स चेंजिंग ना. ऐसे तो सर्कुलर पाथ नहीं होता, उसका बहुत हाँ, लंबा पाथ होता है. सो आई डिड नॉट नो अबाउट इट मच. तो आई केप्ट माई कैमरा ऑन कंटिन्यूअस क्लिकिंग और क्लिकिंग फॉर अबाउट थ्री एंड हाफ आवर्स और समथिंग. उसके बाद जो जितने भी शॉट्स थे उसमें से बेस्ट शॉट्स चूज करके आई पुट दैट अप. And it was crazy because I did that between my examinations और मेरे अगले दिन फिजिक्स का एग्जाम था, and I was so nervous. मैं 3 घंटा वहीं पे वेस्ट कर दिया बट मजा आया था शूट करने में. That's it. सो आपका लॉकडाउन का शेड्यूल क्या है अभी? जैसे हम लोग तो बहुत ऐसे लॉकडाउन में कुछ लोग बहुत सुपर प्रोडक्टिव हो गए हैं, कुछ लोग बहुत लेजी हो गए हैं, तो हाँ आपका हाँ. क्या है? आई थिंक इट्स मिक्स बिटवीन बोथ. सो एकदम शुरुआत में जो यूजुअली होता है सबके साथ, एवरीवन इज कंफ्यूज्ड करना है क्या है भाई, इतना टाइम जो मिल रहा है दिन में 24 घंटे में, तो हम लोग यूजुअली 8 घंटा से 9 घंटा बाहर ही रहते थे. सो अभी उसका क्या करे. तो घर पे बैठे बैठे तो यूजुअली फर्स्ट 2-3 मंथ्स वही मूवी देख के थोड़ा बहुत काम करके चला गया. उसके बाद I'm not sure, like if you know, but I took part in these FFA competitions, which is known as free for all competitions. That basically any popular photographer would give their raw pictures or videos, and you have to edit them and post it on your story on your feed. And whichever it stands out better, they will give a prize or whatever of that. So it's a way of collaborating with their stuff. And one of my very favorite photographer, he also held a FFA, so I took part in that. And it gave me this leverage, like it gave me this boost in confidence as well, because people started loving my work out, out of nowhere, because I used to click portraits, and suddenly I jumped in from portraits into videos, like video manipulation of pictures.
So that was kind of new for my audience, and also people coming new from outside into my account. So uske baad se I started taking things very seriously. So the schedule started rough from there onwards. Like it would be basically waking up like 5:30 or 6 in the morning on the very first time. Okay. And then I used to work on the videos till like lunch and then stuff. 6 hours, 7 hours, and then uske baad 2 hours का break, and then again from 3 to 9 or 3 to 9:30 जो भी है. बीच में अगर टाइम मिले तो I'll post on Instagram, और नहीं मिले तो बस काम ही काम. फिर रात को 9:30 के बाद if I am free then I'll post like 6:30 and 9:30. This is the two times I either post. तो if I miss that then it's gone. Then उसके बाद डिनर करके फिर again I used to start to work, and then till 3 or 2 I used to work. That was the usual schedule. उसके बाद तो बहुत ही गंदा हो गया था भाई साहब. Like till like 5 in the morning I used to work, and then wake up at 1 o'clock and all that stuff. It was just it was just crazy. But now I think so it's a lot more balanced, because now I take out time. I sleep at like 10, wake up at 3, and then I first 3 hours of the day I put on my personal projects. So I get my client work as well. तो उसमें भी ध्यान देना पड़ता है. So from 3 to 6 I give time to my personal projects. From 6 to 7 I do my breakfast and all that stuff. 7 से लेके 11 or 12 I'll do a bit of my college work. college का भी काम होता है. फिर 12 to around like lunch करना हो गया उसके बाद, and then from like 1 to maybe like around 5:30 or something I do all my client works. जो भी होता है सब उसके अंदर डाल देता हूँ. And then I take out time specially in the day to go out and watch the sunset, because I think that's the most beautiful time of the day for me. बहुत ही relaxing होता है. I listen to these old 2000 to 2010 of my favorite songs, and I just jam to the sunset. So how do you manage your time between college work and this freelancing, or what you call Yeah. video creation? Yeah, I actually इसमें से like I'll be really honest, frank. अभी lockdown से पहले I did not earn a single money off Instagram. Still do not do. The only money that I earn is people who like my stuff and give me their projects to work on. But it was hard, because if you do not get something out of this platform, putting out so much of time in this, it feels kind of like stupid. But then I used to make out time for like these projects because I love them. So I used to put up a lot of time in this. So as I like I have to post today, I have to post the next day. I used to take like 2 to 3 weeks time when I'm back in Italy, when I'm studying in my college. उस टाइम पे तो कॉलेज का शेड्यूल बहुत ही खतरनाक होता है. 13 to 14 hours of like daily like work in college and stuff. उसके बाद घर आके तो सिर्फ 2-3 घंटा मिलता है काम करने के लिए. So is that time when I actually explored the creativity and I started to do something. So I think so अभी तो कॉलेज हुआ नहीं था for the last 6-7 months. I think that's when I explored my creativity into video creation. But उसके पहले तो सब photos ही था, and I experimented a bit with like making Instagram filters as well. So those are like just small jobs. I think so now it will be a bit more hard because it's videos as well, and उसमें dedicated time देना पड़ता है for editing. But it's easy because like I now have different time slots. So सुबह like breakfast 7 से लेके 12 बजे तक I do not do any of the work other than college work. तो वो time उसी के लिए है. Like I separate my time slots for different work, and उसमें से I do not do any other work. Like अगर दोपहर को अगर कोई college से बताए कि ये काम कर दो अभी, I wouldn't do that. Like I'm that kind of person कि भाई मेरा schedule चला गया था, मैं अभी नहीं करने वाला, मैं कल सुबह कर लूंगा. So I think that small dedication towards your own, making your own schedule, sticking to it is important to manage your time. I think so. तो अभी आप कोई से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या फिर फ्रीलांसिंग जॉब भी कर रहे हो, या फिर बस अपना इंस्टाग्राम के साथ और क्या क्या कर रहे हो? तो गुड दैट यू आस्क्ड दैट बिकॉज हाँ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत दिन से. बेसिकली लास्ट ईयर आई ट्रैवल टू this place called Murshidabad in West Bengal. I'm not sure if you've heard of it. It's the what do you say, the oldest capital city of West Bengal, I think so at the time. It was like the richest like what do you say, place in India at the time, because यहाँ से business होते थे वो पहले. And also very historic. वहाँ पे हर गली गली में you have this historic building. Like कुछ ना कुछ एक मुगल का राजा कोई ना कोई ऐसा था. And it's very haunted. So I traveled to this place एक साल पहले, and I made this short cinematic video and a vlog as well. तो वही edit कर रहा था. And that's my personal project right now, because I wanted to do that for a long time. लेकिन वही procrastinate करते करते हुआ नहीं था. And I think so I started this project like 2.5 weeks back, and
तब से काम चल रहा है, तो दैट्स द रीजन आई एम अ बिट इनकंसिस्टेंट इन माय टाइमलाइन राइट नाउ ऑन माय फीड, बिकॉज पोस्ट नहीं हो रहा है. बट दैट इज माय अपकमिंग प्रोजेक्ट. वैसे तो फ्रीलांसिंग में तो लाइक क्लाइंट वर्क में तो बहुत ही रैंडम सा काम मिलता है. लाइक अभी recently someone wanted to edit the music video and stuff like that, so it's confusing in that way because मेरा project is some it's a different topic, उन लोग का different topic होता है, तो कभी कभी वो merge करते करते दिमाग का हो जाता है कुछ. But yeah, that is my personal project right now, working on a personal video which is very special to me too. हाँ, that So is there. do you take up clients only through Instagram or Upwork, like Mhm. something? So this is surprisingly like I'm very inconsistent on my YouTube channel as well. But surprisingly, there's a lot of people who watched my videos and my vlogs over there, and they found me through there as well. अब वहाँ से तो like before YouTube had this messaging section जहाँ से you can contact the person, but most people even prefer talking to me personally because email में वो personal touch होता नहीं, it becomes more professional touch. तो फिर they contact me through Instagram, and it's just hard for me to figure out कि वो लोग YouTube से आए कि Instagram से आए. But most of the people that I know have come through Instagram because Instagram का reach ज़्यादा होता है for these short simple videos compared to YouTube. So हाँ, Instagram का ज़्यादा आते clients. I'm not saying कि मेरे ढेर सारे clients हैं, hardly होंगे कितना, like 8 से 10 होंगे. So like out of them, I think so maximum of them have come out of Instagram, and then few of them have come through YouTube. तो आपका जैसे इंस्टाग्राम पे भी Mm-hmm. अच्छा फॉलोइंग है, 7,000 समथिंग है, तो Mm-hmm. अब अभी जैसे जो नए क्रिएटर स्टार्ट कर रहे हैं, तो डू यू Mm-hmm. थिंक दैट इट्स डिफिकल्ट टू गेन ऑर्गेनिक रीच थ्रू देयर कंटेंट? Definitely, it is very much. Honestly, growth on social media is completely based on, it's like 70% luck, 30% skill. Because अभी बहुत ही हाई कंपटीशन है मार्केट में एवरीवेयर. लाइक यू माइट थिंक कि लाइक मुझे लगा था कि 3D VFX में शायद से वेस्ट बंगाल में खुद ही अकेला हूँ, बट टर्न्स आउट नो, देयर आर टन्स ऑफ अदर पीपल ओवर हियर लाइक हु आर नॉट एक्सप्लोर्ड. दैट्स द थिंग ना. मुझे एक थोड़ा सा बूस्ट मिल गया था बिकॉज मैंने एफएफए किया था, सो आई गॉट पीपल फ्रॉम आउटसाइड माय स्टेट वाचिंग माय स्टफ, एंड उससे थोड़ा सा प्रमोशन होता था. बट देयर आर टन्स ऑफ पीपल हु आर वेरी हु आर एक्चुअली प्रोफेशनल्स, इफ आई हैव टू से, जो सालों साल काम कर रहे हैं, एंड दे हैव कम इनटू इंस्टाग्राम टू शो देयर टू शोकास्ट देयर वर्क, बिकॉज अदरवाइज दे विल जस्ट कहीं पे काम दिखा रहे जहाँ पे उन लोग को अप्रिशिएट नहीं होता है. So to gain that audience who really appreciate your work takes a lot of time. Like I think so I genuinely gained those genuine followers from last September onwards. Uske baad se when I took up things a bit seriously, that's when I gained a bit of genuine followers. But organic growth karna is purely like, that's what I said na, 70% luck and 30% skill. Agar luck काम कर जाए तो वो like your post that you have zero expectations with will boom, and the one that you worked your completely like you're off उसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं. Like people, it will just be shadow banned or whatever, like or maybe it's just the psychological thing, like you will expect more from that post but उसमें ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, and the thing that you have less expectations with वो काम कर जाएगा. So my one tip would be to like to newcomers, especially even my younger version would be, do not care about numbers. Okay, content is always varies more than quality, like like over the numbers, and quality always prevails over quantity. So do not spam your post ki. I've seen many creators and I'm not against it कि they're like कि भाई consistent रहना है, post करना है daily, तभी जाके reach मिलेगी. True, I'm not saying that's not true, but I believe it's more important to stick to your quality. Like अगर तुम्हारे काम में मतलब वो quality नहीं रहा over the time, then I don't think so your followers would be engaged with you much. And engaging is very important with your audience. First of all is because it, like you might be following 1,000 people right now, ठीक है, or 800 or 500 people. I can assure you 100% दिन में you would hardly see only 80 people on your feed, stories and posts related. Definitely उससे ज़्यादा मिलता नहीं है. So to for an or like I'm someone following me, for my post to show it up to them, I need to engage with them ताकि उन लोग को दिखे मेरा काम. So I think in that terms it's important that you engage, you use all the options available. Live jao, stories upload karo, do not spam stories relatable stories upload karo. Put up polls, post and add a small story to your caption ताकि लोग relate करे उससे.
these are all small steps towards gaining a proper audience who will appreciate. नहीं तो वही मिलेंगे जो सिर्फ कमेंट करते रहेंगे कि wow nice post, just 3 मिनट 3 सेकंड हुआ पोस्ट करते हुए and then they'll put up nice post, दिखा भी नहीं उन लोग को वीडियो पोस्ट। अगर रहेगा 2 मिनट का और 3 सेकंड में कमेंट कर देते हैं। वही I've seen this, so हाँ होता है, but वो genuine followers मिलेंगे, just you just have to wait for it and post like with all your heart. That's my small tip. तो जैसे फेसबुक तो ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से पूरा डेड हो चुका है, फेसबुक में अब ऑर्गेनिक हम्म, रीच है ही नहीं, अब वो एड्स नहीं चलाओगे है। तो अलग बात है। तो अब धीरे धीरे इंस्टाग्राम भी उस पे जा रहा है। हम्म, तो एकदम। अभी बहुत मैंने आर्टिकल कहीं कहीं देखा था, तो अभी डिबेट चल रही है कि व्हाट इज फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, इमेज या वीडियो। तो उस पे बहुत चल रहा है कि अब अगला जो रहेगा वीडियो ही हम्म, ज्यादा रीच रहेगा, वीडियो का ही मतलब वो रहेगा, डिमांड रहेगा। हम्म। तो आपका क्या उस पे वो है, विचार है? um I would stick to that option, like that part of the debate कि video might prevail. I'll give you a small example and explanation as to why. Abhi recently Instagram brought out Reels, which is like the Instagram version of the TikTok, या फिर कुछ भी other यस। platform का बात कर लो तो हम्म। Reels is this one platform जहाँ पे 15-second video you can upload, less than 15 seconds, and then it would be viral. The reason why I'm saying this is because humans nowadays have seen, like a goldfish has a, what do you say, time, like a attention span of like 10 seconds or 15 seconds, I guess. Humans have a attention time span right now even less than that. 5 सेकंड अगर कुछ कंटेंट एंगेजिंग नहीं लगा तो वो स्किप करके चले जाएंगे या फिर सिर्फ लाइक छोड़ के चले जाएंगे, दे वोंट एंगेज मच. So a 15-second video में a person can do a lot of, I think, like a lot of stuff. This is the reason why have you heard of the app Vine यस। जो 2013 में पॉपुलर हुआ था? That had a 7-second time limit. ठीक है, उसमें से you can do anything, and that the only reason it got popular is because 7 second में you can narrate an entire story and the audience can watch it again and again. So there, it's like watching a single movie again and again, and you're just spending 7 seconds. तो जैसे आपने बोला, तो मुझे पता नहीं आपने देखा था, एक बीच में चला था हम्म, इंस्टाग्राम स्टोरी पे, जैसे कि सपोर्ट योर फ्रेंड्स और ऐसे करके एक स्टोरी हाँ रहता हाँ, था कि आर्टिस्ट। हम्म, तो वो पोस्ट तो बहुत वायरल हुआ, लेकिन मतलब जो अब हम्म, असली में जब आती है बात हेल्प करने की फ्रेंड्स को, तो लोग उतना मतलब नहीं करते हैं सपोर्ट, मतलब इग्नोर कर हाँ, देते हैं और ये सब। तो हम्म, स्टार्टिंग में कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में जो लोग आपको मना करते थे कि अरे ये सही नहीं है या फिर सही नहीं कर रहा है, और अब जब वो आपका काम देखते हैं तो मतलब हम्म, आपकी तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और आपका काम को? है, बहुत है, like स्कूल टाइम में, like I told you ना कि when I started I used to take pictures from this old fat Canon का वो waterproof camera that literally looked like a turtle, ठीक है. And that time I did not, I like, the thing was like that time my father did not get me a camera, and like most of the people in my school they used to bully me a lot, like तुझे आता नहीं कुछ, क्या कर रहा है ये सब. And it was very demotivating because even at that time the people who I used to look up to, ठीक है, the proper photographers, portrait photographers, even when I was starting back in 2017, they also, like, तब तो मुझे पता नहीं था कुछ. I used to start and they used to, like, instead of like giving constructive criticism उस टाइम पे there's this thing कि they would just be like क्या टट्टी काम किया है क्या कर रहा है तू. तो I think so ऐसा बहुत लोग हैं who just who just went to the trend just because they want to get popular. I've seen a lot of people. I think if you really want to support your creative friends, show it. ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टोरी बना दो साल में एक बार एंड देन बस हो गया. If you genuinely mean it, एक simple share है भाई. Like, I've seen हम्म। people in my friend circle, they've shared the most weirdest videos to their stories, random spam करते रहते हैं. How long does it take for you to just click on the share button and share to your story? ठीक है, keep it there for, like, it's just 24 hours, चला ही जाएगा. ठीक है, if you want to if you really want to support your friends, do that. That's the most simplest way. या फिर leave a comment, कुछ भी comment छोड़ दो यार, अच्छा लगता है. So I think those small things would make even better what do you say, impact than just writing stories पे कि yeah man, I support my creative friends. बहुत हाँ, hypocrites देखे ऐसे, and मुझे पसंद भी वो नहीं ऐसे रहता है, type. जैसे वो स्टोरी डालने की जगह तुम 2 स्टोरी डाल देते अपने किसी फ्रेंड के वर्क का, तो ज्यादा वो मुझे लगता है सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करने के लिए अपील करने से ज्यादा, क्योंकि वही लोग रहते वही, हैं जो सपोर्ट करने के लिए स्टोरी डालते हैं, वही लोग होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, ज्यादातर ऐसा रहता है। हाँ ये तो है, like, मुझे and इसका सबसे बड़ा कारण ये hmm, लगता है कि शायद से, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में उन लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया था और मना किया था कि मतलब हाँ, ये सही चीज नहीं है, मत करो। और आपने उनकी बात नहीं मानी और उस पे बहुत हार्ड वर्क किया,
अपने कंटेंट, अपने आइडियाज को बिल्कुल बर्स्ट किया, उस पर हार्ड वर्क किया और फिर वो सक्सेसफुल हो गया, तो उनको लगता है कि मतलब मैंने कुछ गलत बोला था, या इस वजह से भी मुझे लगता है कि हम्म, मैं तो वहीं पे, मैंने बताया मैं वहीं पे रह गया, ये तो अच्छा कर लिया। ये एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट है, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट स्टोरी दैट हैपेंड टू मी। बिकॉज मैंने कहा था लास्ट ईयर स्टार्टेड पोर्ट्रेट का, तो आई हम्म। वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो पोर्ट्रेट के साथ आई यूज्ड टू लाइक डू दिस स्मॉल video manipulation kind of with portraits, and I used to add music to it and a music player to it. So I'm not sure about anyone, but at the time I did not know anyone in my community or anyone in my following to do that. मैंने उसको स्टार्ट किया एंड पीपल क्रिटिसाइज मी अ लॉट कि भाई ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में नहीं जाता है। ठीक है, you're putting up a video, you're putting up a music player on it, what do you expect this to be like the next genre? like ये क्या क्या काम कर रहा है तू? बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, बट देयर आर आल्सो पीपल हु लाइक ब्रो ये सही काम चल रहा है, तू चलते रहे। एंड देन आई डिड इट फॉर like 2-3 months straight. Down the line right now there are, you'll see everyone putting up this story, एक post एक picture डाल दे, उसके बीच में music player डाल दे, and then गाना बज रहा है हम्म। background में. And now I look back into it and I'm like, wow, you see that gradual change. जो पहले like, and even the people who used to criticize me before, now they are also adding music to their photos and making it, making it stand out. So I'm not saying कि ये गलत कर रहे हैं वो लोग. I'm just saying कि do not criticize so much before actually looking into the good side. Like hate comments करना बहुत easy है, 2 सेकंड का बात है. I'll just say कि तू टट्टी है, छोड़ दे. हम्म। It's just easy, I'll forget about it. But the impact it leaves on the creator is huge. Like I can leave a hate comment on you and then I can just go off to my work. मुझे पता भी नहीं कि मैंने कुछ छोड़ा कि नहीं. बट उस But पे you as a इम्पैक्ट creator, करेगा, इट विल बहुत impact इम्पैक्ट द करता है. क्रिएटर। Impacts his confidence so much that he won't be able to make any stuff in the future. So एक ही like the small thing that you can do as an audience is, पसंद नहीं आए तो ignore कर दो, पसंद नहीं आए तो unfollow कर दो, but do not spread hate. अगर कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है उसको पर्सनल डीएम में बता दो कि भाई आई डोंट लाइक दिस थिंग अबाउट यू, मे बी यू कैन वर्क ऑन दिस, बट डू नॉट spread negativity on like public platform, because वो बंदा like no matter good or bad has worked a lot to get to that position in his life. So it should be a bit respectful for you in that sense कि just respect his position and his rights and whatever. So do you think that as a creator to grow on Mhm. Instagram, it's easy for female creators to grow fast, Mhm. or it's Okay. equal for both the creators? I think it goes side by side for both male and female. Because it would be very biased to say कि female creators का बहुत easy होता है growth होना. At some point in the social media thing, it is. I'll get to that later. But I'm talking about my creator friends who are females. I have a lot of people in my following who are female Hmm. creators who work a lot. ठीक है, self portrait artist है, portrait photographers है, landscape photographers है, they're video creators as well. So this social norm of कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती and that stuff, it's completely false. I know this creator who has 15K subs on YouTube and she does an amazing work. Like she deserves a lot more. But then there are also these people, you know, I'll just give a small example. Portrait photography is like about concept and idea and execution of that with the model. एक concept होना चाहिए. But lately I've seen what's happening on social media is this trend of like getting a girl, showing as much body as possible without having any concept in mind, and that would get viral, that would get 15K likes, 20K likes. Whereas a person with a proper concept and idea, जिसके पीछे actually takes weeks and hours of research and development. पता है, मैं एक बात बताऊंगा जो सबको चुगेगी, but बात एकदम सच्ची है कि the person, like no matter you are complaining कि ये बंदा popular हो रहा है, ये हो रहा है, you are part of it. You are part of it that बंदा is getting popular. कोई गंदा पिक्चर अपलोड करे या anyone that's revealing, why? Okay, if there's a person who you don't like, a female creator, just a female or a male creator who you don't like, but you follow them, you engage with their stuff, even ठीक है, अगर कोई एक गंदा सा वीडियो या फिर बहुत ही लेम वीडियो कोई अपलोड कर रहा है, तुम उसको अपने स्टोरी में डाल के ये लाइक कि ये क्या लेम स्टोरी है, ये क्या क्या कर रहा है, like That indirectly also you're engagement yeah, देता है. That's also provide them exactly. engagement. So you're indirectly giving them the promotion that that they're begging for or they're needing for. So simple ways कि उसको ignore करो and move on, because ये जो बोलते हैं कि ये लड़कियां ये revealing pictures डालते हैं, अरे तुम ही तो हो जो जाके comment कर रहे हैं, तुम ही तो हो जो जाके देख रहे हैं. So stop doing that ना. उसको, you have an option in Instagram जहाँ पे ऊपर के 3 जो dots होते हैं, you can click on that
and click on not interested option. So you won't see those type of content from next time onwards. क्योंकि इंस्टाग्राम So वो मैसेजेस को नहीं करता है, वो देखते हैं कि आपने कमेंट किया, और एक कमेंट मतलब exactly, एंगेजमेंट हो रहा है, एक स्टोरी मतलब एंगेजमेंट, फिर आपके फॉलोअर जाएंगे वही, उस फोटो को देखेंगे, फिर उसमें हेट भी अगर डाल रहे हैं कमेंट में तो वो एंगेजमेंट एक तरीके से. exactly. So, moving from this Instagram topic, so Mm-hmm. so what are all, जैसे अभी कोई creator, what you love to call yourself, a photographer, editor, or a Hmm. YouTuber? Because you manages I to do think, all the thing. yeah, I'll just stick to being content creator because um it's just because like I do all of the stuff and it's hard for me to even categorize myself into one of them. So I think I'll stick to content creator because it depends ना. अभी मुझे photography पसंद नहीं है, तो I can just start off with like any other designing या drawing कर लूँ, वो upload कर दूंगा अपने page पे. So that's the reason, actually that's the main reason, because मेरे पहले like my category of my page was photographer. उसको मैं हटा के I put it content creator like from I think so 2 months back or so, because I believe like it doesn't justify me great. I'm not a photographer. I can't take professional pictures. I just love taking pictures, तो मैं वो डाल देता हूँ. But calling myself a photographer would be wrong. Calling myself a content creator would be right, because that's what I do. I do videos, filters, जो भी मन में आता है मैं डाल देता हूँ, and those are like content for me. So I think I'll call myself a content creator over a photographer. जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वीडियो क्रिएशन, तो मतलब कौन कौन से सॉफ्टवेयर, मतलब स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, और फ्रॉम बिगनर लेवल टू एडवांस आपको सजेस्ट कर Mhm. सकें और Uh, उस तरह से. for that, for that, like I would say start off from, अगर तुमको 3D VFX सीखना ही है, start off from Blender. Blender is a free for all tool, completely free, and you'll find tons of tutorials over there on YouTube on how to work with them. All you need is a bit of a powerful setup, because उसको run करने में उतना झमेला नहीं होता है, but to render it takes a lot of time, even if you have a proper setup. So having a proper setup, having all of that, Blender should be a good place to start off with, like those kind of animations and stuff. You can do anything, starting off from realistic animations to cartoon animations, and anything you can think of in 3D VFX. And once you get become a bit of a professional in that place, then move on to Cinema 4D, because Cinema 4D is a paid app, and usme se you have much bigger capabilities and works to do. And since Blender is completely free, that's what I would recommend to everyone, because that's what I have worked on as a beginner. Abhi मैं beginner ही हूँ, तो once you work on that, then you can move on to like complex apps like Cinema 4D. And for video creation, what software अच्छा, do you use? so video creation में एकदम beginning में I told you I had my iPhone, तो उसमें so I there was this app called iMovie. तो उसमें I used to edit my videos. Then laptop में अगर Windows का बात करें, because I had a Windows laptop for a small period Yeah. of time, then I moved on to MacBook. So Windows में you have tons of apps, ठीक है? You have Premiere Pro as well. If you want to do a bit more complex type of 3D work as well, like video में ही, then you can try out After Effects. That is very hard, but it will give you, it'll benefit you in the long run for sure if you're doing some good video creation, because अभी ना normal videos से काम नहीं चलेगा. You have to take it up a notch with 3D visuals and all this stuff as well. So After Effects is there. It's hard. And if you want to take it like really professional, thoda sa in Windows, then I say I would like, even in Mac as well, because Premiere Pro and After Effects, and okay, these all work on Mac as well. Mac may I work on this software called Final Cut Pro 10, which I've been working for the past 1.5 years, 2 years since I got my MacBook. And it's been my like my most of the power and the work goes into that as well. And now what I'm learning is After Effects, and uske baad I'm moving on to this software called DaVinci Resolve. So DaVinci Resolve is this free. That's also completely free for all. Like this app, जहाँ पे you can do anything. Like उसमें video editing होता है, but I want like mainly it's popular for its color grading tools, because वो professional level, even professionals while editing a video or a movie, like a proper movie, उसमें से they also choose DaVinci Resolve to color grade their footage. So DaVinci Resolve is one. DaVinci Resolve, Premiere Pro, After Effects, and Final Cut Pro 10. These are the apps that I would say is good to start off with, because start off with something good at a position doesn't start something simple, ताकि तुमको समझ में आए. And do not expect कि तुम एक बार में सब सीख जाओ, धीरे धीरे से सब सीखोगे. So yeah, don't be intimidated.
सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लर्निंग, मतलब आप सीखते कहाँ से हो? जैसे यूट्यूब पे कौन से Mm-hmm. चैनल्स है जो आप देखते हो, या फिर अगर कोई और सोर्स है, कोई वेबसाइट है तो? ओके तो ऐसे फॉर 3D VFX एंड ऑल जो ब्लेंडर का काम है, यू कैन चेक आउट दीज टू चैनल्स. इफ यू आर अ बिगिनर, चेक आउट 3D डकी. Yeah, no, so Ducky 3D, my bad. Ducky 3D बोल के एक channel on YouTube, that's for beginners. Once you have done with that, then you can move on to this another page called CG Geek. That is like a bit of an advanced kind of 3D visuals type का, वो all on Blender, ठीक है. So these are for Blender tools because Cinema 4D अभी सीखा नहीं है. For other videos, I don't think so. I choose like for tutorials, I think so. Photos का तो वो अलग से होता है. But for videos also, I don't have any particular artist who I follow. But yeah, there are few people who's कुछ कुछ काम होता है like Final Cut का, जैसे Ryan Nangle है. These people who have these amazing tutorials on YouTube on how to do this simple small effects on like ऐसा नहीं कि I learn completely from scratch, ठीक है. Like I work on a video, उसमें से if I want to do a certain kind of transition कि मुझे ऐसा टाइप का काम करना है, उसका I can search up on YouTube कि how to do this. But it's very impossible to learn everything on YouTube. Random things you learn and you can apply those, and then that's how you will move on. So I think everyone people ask me on DMs as well कि भैया कौन से चैनल से देखूं मैं tutorials to understand. I think best way is तुम अपना काम करो, like you do your own stuff. तुम्हारा तुम्हारा खुद का क्रिएटिविटी हो, उसमें वट एवर ट्रांजिशन और इफेक्ट यू फील लाइक मुझे चाहिए कि ये मेरे दिमाग में है कि ऐसा होना चाहिए वीडियो, बट आई डोंट नो हाउ टू डू. उसमें यू कैन सर्च सिमिलर ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब, एंड उसमें से यू कैन सी ना कि ये रेटिंग्स कैसा है, किसमें ज्यादा लाइक्स आया है, व्हिच वन इज मोर यूजर प्रेफर्ड. सो वॉच दोस. तो आप इतना एनिमेशन और आप वीएफएक्स में इतना, तो आपकी कोई एक कौन सी 3 फेवरेट मूवी है जो एनिमेशन और वीएफएक्स जिसमें आपको बहुत पसंद आया हो? Oh, wow, that's a great question. I say I've never looked into this thing as in general, but wow, I'm a really big fan of Christopher Nolan movies. Although उसमें like he loves using CGI to a certain extent. ठीक है, ऐसा नहीं कि he loves putting CGI everywhere, but he puts these CGI effects so gracefully, you'll feel like they're real. So realistic CGI के लिए I think so Christopher Nolan movies are just mind blowing. I'm a big fan of his work. Um, also बाकी तो बस वो जो usual होता है. I love Tron Legacy. I love that movie. I just feel like it was just amazing. Then recently I've seen this Iranian movie. I forgot. It was this collaboration between Iran and Pakistan on this one small animated movie, which is like this Japanese anime style का उन लोगों ने किया था. I forgot the name of the movie, but it was just beautiful. So I love these Japanese anime movies as well because उसमें तो those are not like computer animation. Those are almost like hand drawn animations, ठीक है. So those are like something that I really like because उसमें they have huge amount of creativity, and the usual animated movies in general. But I think so realistic, now that I'm into realistic CGI and all that stuff, I look into movies and break down some movies. तो जैसे मार्वल का तो totally green screen होता है उसका सब कुछ ही CGI है. And then just to see the behind the scenes gives you an idea or perspective कि how vast the the field is in this in CGI. So I think yeah, Christopher Nolan movies, these all stuff, small चीजें यहाँ पे. But my favorite movie till date would be hard to say because it keeps on changing ऐसे. तो आपका मैंने यूट्यूब पे भी देखा कि वीडियोस बहुत मतलब ऐसा कैची होते हैं, जैसे टाइटल और मतलब टाइटल पढ़ के ही आदमी क्लिक कर ही देगा ऐसा, और थंबनेल भी ऐसा रहता है, अच्छा सा रहता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव. तो इसका Hmm. क्या मतलब, आप मतलब किस तरह से डिसाइड करते हो क्या थंबनेल कैसे कैची रखना है, या फिर ये टाइटल कैसे Hmm. डिसाइड करना है? कुछ प्रोसेस है या फिर जो दिमाग में आता है कि ये ज्यादा कैची है वो रख देते हैं? हाँ, तो बेसिक जो व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम मोस्ट क्रिएटर्स इज दैट उन लोगों के दिमाग में पहले से होता है कि क्या मैं रखूंगा टाइटल, थंबनेल क्या रहेगा. सिंस मेरा व्लॉग्स होता है एंड लाइक मे बी मैं आज व्लॉग कर रहा हूँ, उसका एडिट मैं आज ही नहीं करता हूँ. लाइक दैट्स माई वेरी हम्म. बैड हैबिट. मैं 2-3 महीने बाद जाकर करता हूँ एडिट. सो आई कंप्लीटली फॉरगेट कि हुआ क्या था व्लॉग में, कुछ पता ही नहीं था. सो व्हेन आई एडिट दैट व्लॉग, उसके बीच में इफ आई फाइंड समथिंग वेरी फनी, उसको I write it down in a notes or somewhere else, and then बाद में I take a screenshot of that and I edit it out वैसे करके I put up a story and I try to make my captions like it's this weird combination I have. It's like I want to make it
क्लिक बेटी, लाइक क्लिक बेट टाइप का लगे बट क्लिक बेट ना हो. जैसे रिसेंटली आई हैड पोस्टेड वीडियो जिसमें था कि आई रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम चाइना. ठीक है, हाँ एंड देखा दैट मैंने। इज, हाँ जब जब ओ आपने देखा था. सो हाँ उसमें से लाइक आई रिसीव्ड अ पार्सल फ्रॉम चाइना व्हिच इज अ ट्रेंडी टॉपिक बिकॉज उस टाइम पे कोरोना वायरस का तो हल्ला मच गया था. सो इट्स नॉट क्लिक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज क्लिक बिट बिकॉज वो चाइना से पार्सल का वो बात था. सो पीपल विल लाइक अरे भैया इसने तो अभी लाया पार्सल. But secondly, it is not clickbait because I actually received a parcel, but I received it way back in September 2019. So does not, it has no context to the recent scenarios. So that's what I would say कि just to make it a bit clickbaity, but do not make it false. कि ऐसा नहीं कि तुमने कुछ किया है उसको exaggerate करके कुछ अलग ही बना दिया भैया कि मतलब मुझे कोरोना वायरस हो गया चाइना से, ऐसे कुछ ऐसे मत लिखो. जो ऑनेस्ट है वो लिखो. एंड आई थिंक थंबनेल्स का व्हाट यू सेड कि दे आर कैची. अबाउट दैट व्हाट आई वुड से, मैंने पहले कहा था कि आई लव कलर्स एंड आई लव कैच those vibrant colors. So I think I apply a lot of what do you say, colors or attractive colors in my thumbnails that makes it a bit more catchy. कि फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई इस तरह की कोई आर्ट से रिलेटेड पेंटिंग या कुछ भी क्रिएटिव फील्ड में कोई कुछ करता है? नहीं, honestly, like until I started, मेरे फैमिली में कोई नहीं था who used to be in this. Like I belong to this family जहाँ पे like we're not that educated. ठीक है, like it's just me. I'm the first person in my family to ever go to a college. So it's just उस level का है कि I'm the first person in my family to go to college. So like everyone in my family, no one pressurizes me कि तुम ये करो, तुमको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है. हाँ, पापा का विश था कुछ अलग, लेकिन मैं कुछ और ही कर दिया. बट it's like they never forced me कि तुम ये मत करो, YouTube मत करो, Instagram मत करो. They always love the creative side कि नहीं, he's doing something, and they actually support me a lot. I would never say कि they didn't support me throughout anywhere, because they have always like whenever I ask my dad कि dad मुझे camera चाहिए, like to make my vlog. That's the first vlog camera 2016 में. Not only did he get me a proper vlog camera, he got me a DSLR as well, even to take pictures. So just that small thing कि family support मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है for a content creator. So I think yeah, like मेरे बाद I think a lot of people in my family joined in as well. My brother, he started his YouTube channel. My sister also like started her Instagram page. So I think after me, I'm very very glad that my cousins and all, they're all starting up their creative, because मेरे family में अभी almost everyone that I know is into some creative field, somewhere or the other. कोई designing कर रहा है, कोई photography कर रहा है. So So that's what makes me happy. you have started that pillar. That trend in the family. Yes. हाँ हाँ. तो जैसे अभी कंटेंट क्रिएशन, आपको क्या लगता है कि वीडियो क्रिएशन जो स्टार्ट हुआ है उसका Mm-hmm. इंडिया में क्या फ्यूचर होगा? जैसे ब्रांड्स, अभी बहुत रिसेंटली मैंने देखा बहुत सारे ब्रांड्स इंटरेस्ट ले रही हैं फ्रीलांसर्स से अपने कमर्शियल वीडियोस Mm-hmm. बनवाने में, और इस तरीके से ब्रांड मतलब सीन में आना स्टार्ट हो गया. मतलब यूट्यूब सीन जब स्टार्ट हुआ ना इंडिया, उसके बाद से ब्रांड्स आर इंटरेस्टेड इन वीडियो क्रिएशन. सो Yeah. अगले कुछ सालों में वीडियो क्रिएशन का सीन क्या रहेगा आपके हिसाब से इंडिया में? Video creation, or do you mean like content creation? Which one? कंटेंट क्रिएशन इन होल. Content creation. Okay. So my idea of this is that this will be the next YouTube, and like this is growing and will keep growing. There's no stop to this. I'll tell you why. In this recent interview, um, Bhuvan Bham, BB Vines had this interview. जहाँ पे he was told कि actually Shah Rukh Khan only this one time in the interview he had told this to the interviewer कि like this last lot of Bollywood actors or actresses that you have right now are the generic ones जो proper Bollywood acting के लिए आते हैं. But the next set of actors जो आएंगे, those are not going to be these actors who are working their ass off much and all that stuff. It'll be generally people who are coming off social media, because social media has such a big influence right now कि like people like even like 5 years back you wouldn't expect कि a person like a content creator who's on YouTube would make it to Bollywood movies and stuff. ठीक है, you have Harsh, wait, it was Harsh जो था Beniwal. He हाँ went हाँ. into making Student of the Year 2. So a YouTuber went into making a movies, And we and have also there are people. also seen shift from that Bollywood star are started making their Yeah, YouTube yeah. channel. Exactly. That's what I'm saying ना कि जो people who thought कि social media कुछ कर नहीं पाएगा, अब इसका जो leverage like it has more reach I think so than any other like Bollywood star का तो है, like it's there, but like
it's like Bollywood movies साल में 2-3 बार आते हैं, ठीक है, your favorite actors might come 2-3 times, 2 years max, 2 times max in a year. You see the movies and like, oh क्या movie बना है. And whereas compared to social media content creators, they can come to your feed almost daily. उनका तुम stories देख रहे हो, उनका तुम posts देख रहे हो, you're connecting to them daily. It feels like they're part of your own life. So वो जो connection होता है ना, like that close up connection that makes audience feel, you know, कि नहीं ये कुछ है, मतलब ये असली का है over there. So I think so the future of content creation would be social media. You know, the whole like social media thing is growing right now, and it's important कि if you're thinking कि तुमको इसमें चढ़ना है, इस बस पे चढ़ जाओ भाई, like it's not gonna stop. तुम चढ़ जाओ, it's not like जाके खत्म हो जाएगा फिर it'll be too late for me. Nothing is ever too late. If you feel like तुमको करना है तो just चढ़ जाओ and then करते रहो, because brand collaborations, because brand right now they are looking into as unique as possible. पहले क्या था, they had these bunch of people in their team who used to think of ideas ki ye idea pitch karte, ye must chalega. But now they're hiring social media, you know, what do you say, like influencers or whatever, the creators and all. वो लोग हेल्प करे कि ऐसे बनाओ वीडियो, मैं हेल्प करता हूँ, यू नो, तो दोनों का प्रमोशन हो रहा है एक साथ में. दे हैव न्यू आइडियाज एंड इट्स नॉट लाइक दे स्टिकिंग टू वन टाइप ऑफ जॉनर. जैसे पेज माइट बी इनटू वीडियोस, तो वो वीडियोस का कर रहे हैं प्रमोशन, लाइक द पर्सन इज मेकिंग वीडियोस फॉर देम. Then they also have people who are animating cartoon characters for them. So it's like it's not just sticking to one genre. They have different, because you have the thing like कि मुझे portrait photographer चाहिए तो मिल जाएगा मुझे, because options तो ढेर सारे हैं ना, अभी उसमें से चूज कर लो जिसको तुमको पसंद है. तो इट्स नेवर लाइक कि शाहरुख खान बिजी है मीटिंग में, भाई साहब वो तो आने नहीं वाला है मेरे इसमें शूट में, तो बस खत्म आज का. वो नहीं आ रहा है तो सोचो लाइक, यू नो, ये बंदा नहीं आ रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, उसका तो और एक है ना लड़का दिल्ली में, उसको बुला लो, he's also there, या कोलकाता में उसको बुला लो. It's like somewhere or the other you will find a person like anywhere, any part of the world. So I think that small thing, and even like brands are now collaborating with international creators as well. Like international creators are collaborating with, you know, our creators over here. So I think it'll just grow, it'll keep on growing right now, and it has no stop to it. But I just hope कि they take things a bit seriously and, you know. तो जैसे अभी तक आपने किया है ये, तो अभी आपका लॉकडाउन के बाद आपका कुछ आपने प्लान करके रखा है, कुछ अलग सा यूट्यूब के लिए वीडियो, या फिर कुछ नया ऐसा जो आप अभी लॉकडाउन के पीरियड में काम कर रहे हो, और मतलब सोचा है कि जब सही होगा तो रिलीज, कुछ मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट यूट्यूब पे के लिए काम कर रहे हो कि व्लॉग्स पे कर रहे हो? हाँ तो नहीं, वो जो मैंने बताया था मुर्शिदाबाद जब गया था उसका जो वीडियो मैं कर रहा था, तो वही दैट इज द नेक्स्ट बिग थिंग दैट आई हैव इन माइंड. वैसे कुछ तो प्लान्स है, लाइक नो व्हेन आई गो बैक टू इटली और दुबई, आई हैव सम प्लान्स विद सम 3D विजुअल इफेक्ट्स. अभी तक वो पता नहीं कैसे करूंगा या कैसे हो पाएगा, बट फॉर नाउ द नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट फॉर मी इज लाइक माय मुर्शिदाबाद वीडियो, व्हिच इज नॉट दैट ग्रेट, लाइक इट्स नॉट, यू नो, दैट अमेजिंग, बट आई हैव, यू नो, कि थोड़ा बहुत प्यार दिल में कि नहीं ये बहुत ही लिखने स्पेशल है मेरे लिए. सो आई थिंक दैट्स द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर मी. सो लास्ट मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपका सोर्स ऑफ लर्निंग से आप कोई बुक पढ़ते हो, मतलब कुछ नया सीखना, क्रिएटिविटी ब्लॉक नहीं हो आपकी, उसके लिए कोई बुक्स पढ़ते हो या पॉडकास्ट सुनते हो, मतलब क्या करते हो उसके लिए? हाँ, ऐसे पॉडकास्ट तो बहुत सारे है, लाइक बुक्स मुझसे लाइक क्लास 8 के बाद पढ़ा नहीं गया, बिकॉज क्लास 8 तक मैं बहुत बुक्स पढ़ता था, एंड देन it was great. After that, you know, it's just been like, you know, I can't read books much for long, to be very honest. But I hear a lot of podcasts. बहुत podcast सुनता हूँ मैं YouTube पे when I'm down. वैसे like, you know, I might be down and I'm doing some work जिसमें कुछ motivation मिल नहीं रहा है या बहुत ही boring काम चल रहा है, मैं बैकग्राउंड में YouTube में टेड टॉक्स चला दूंगा, या किसी पॉपुलर एक यू नो ये गैरी वी, उसका मैं सुनता हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस. लाइक, यू नो, इट्स देयर, लाइक, यू नो, बियर बाइसेप्स का भी होता है, कुछ बहुत अच्छा होता है. इसको सिंपल करने के लिए मैं ऐसे पुट कर देता हूँ क्वेश्चन कि ऐसे कौन से 3 वेज या 3 क्रिएटर हैं जिससे आप अपना सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेते हो, अच्छा, या क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए उनको सुनते हो? तो पॉडकास्ट का बात करें तो वैसे 3 वेज तो निकालना टफ होगा, बिकॉज पॉडकास्ट इज नॉट द ओनली वे आई गेन माय मोटिवेशन. Easiest ways, because like when I feel like I'm losing grip on like my creativity or whatever, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, I simply just go offline and like, and ये जो बुगाटी का जो पोस्ट था, बुगाटी पोस्ट, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, हैरी पॉटर, जितने भी पोस्ट है मेरे इसमें, these are all results of that.
because during the period जब I was completely offline, I saw the entire Harry Potter series. उसके पहले मैं कुछ देखा नहीं था, मैं कुछ पढ़ा नहीं था हैरी पॉटर के बारे में. 3 pieces of advice जो Mm-hmm. आप नए क्रिएटर्स या नए आर्टिस्ट आ रहे हैं इस फील्ड में उनको देना Mm-hmm. चाहोगे अपनी तरफ से, जो आप अगर अभी अगर आपकी जो भी गलतियां हुई आपने स्टार्ट किया हाँ तो हाँ. आपकी कौन सी गलतियों से वो लोग सीख सकते हैं? Okay. So first of all would be the attention to gears, because ये एक to a certain extent I feel like number one thing is gears का जो मामला हर हर लोगों का होता है, like every field की मेरे पास ये certain item नहीं है, मैं कैसे content create करूँ. This is always there, but one thing you should always remember कि everyone starts from a certain position. ठीक है, ऐसा नहीं कि सब everyone will start with proper gear setup सब कुछ. It's that small creativity in you that makes you interesting. Let's say you'll see people creating the best music out of just more normal drums and cans over here. तो उसके लिए you don't need the tools, ठीक है, as long as you have the creativity and the passion you will get to it, and slowly develop होता रहेगा. It's not like अभी से तुम you get all the materials and then you'll start off great. That's one thing. Do not pay attention to your gears. जो भी है तुम्हारे पास, make most use of it. That is very important. Secondly, I would say that quality prevails over quantity very much. There are a lot of people I know who have less than 500 followers but make immense beautiful content, and I try to boost their accounts as much as possible on my like through whatever I can, because I feel like they deserve it. So I would say कि do not run behind this thing कि मुझे daily post करना है ऐसे कुछ. अगर post अच्छा है तो करो, I'm not saying कि मत करो, but quality should always, you should always have this target कि अभी जो quality है मेरे post का अगले post में इससे ज़्यादा बेहतर हो. That should be number 2 thing. Number 3 thing is do not pay attention to numbers. बहुत लोग जो गलती करते हैं including me when I first came is pay attention to numbers कि मेरा भाई मेरा 1k 5k 10k नहीं हो रहा तो मतलब मेरा content कुछ अच्छा है ही नहीं. That is not at all true. Like, you will understand this most from like, these professional photographers as well. ये जो Nat Geo के photographers and all that stuff, they're stuck here with what 20k 30k followers, like followers and stuff, whereas they deserve like thousands and millions of followers. In But they don't pay attention to it ना. They just have a platform an additional platform जहाँ पे they can show their work. So consider you Instagram or whatever YouTube as a platform to show your work, but do not consider your entire life into it कि ये मतलब इसमें लोग नहीं देख रहे तो मतलब ये पूरा गंदा है. People will take time. Like now the gradual shift from it's a lot, because now people are actually seeing content more than the random videos जो भी था पहले. So people are actually into content creation nowadays. So time लगेगा, but धीरे धीरे people will pay attention to your work. So that's what I would say. Do not run behind numbers. Do not ever spam your favorite content creators DMs with your own post. उनका hashtag use करो, engage with them properly and honestly. Don't just go in the comments and be like हाँ भैया मस्त पोस्ट, हाँ क्या मस्त है. जो भी genuinely बताना है, कुछ गंदा लगे तो लिख दो, कुछ अच्छा लगे तो लिख दो. Do not spread hate and just live peacefully. तुम अपने business से अपने काम चलाओ and then it'll be better. Just that these 3 tips would work in any field, not just in social media, any other field. Numbers does matter in terms if you're doing a business, but हाँ like जैसे pages they usually choose creators just because if they have a large number of following, वो अलग बात है. But if you're really genuinely promoting your stuff, जैसे I know this creator who has 12k followers on Instagram. On YouTube he has around 48k subscribers, but he gets brand collaborations from one of the biggest companies in the world as well. So it's not like they are not looking into his numbers, they're looking into his creativity. उन लोग का ideas मिल रहे, they are putting that into their business, they are earning money, he's earning money. तो थैंक यू हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए. Thank you for taking me in. It's been great talking to you, honestly. I have linked all the social media handles of Simon in the description box below. Go see his works and follow him and subscribe to his channel. We will meet in another episode of Behind the Creators soon. Till then, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. Stay home, stay safe.